सुखमहम अवाप्स इति च ततः च सर्वदोषरहित कूटस्थ आत्मा संगाते वर्तयति सिद्धम तस्य परत्वमा हरिति अंतःकरणे शुद्ध आत्मानुभव परमात्मानिष्ठा जगत कारणं विग्रह च भक्ति मार्गानुसारेण अन्वेषणेन यत् प्रियं भवति तदा पुनः प्रवृद्ध अंतःकरणं मलानि दूरीकरोति भक्ति बहुफलत्वाद् हरिति उक्तम् ज्ञानार्थं यत्मानस्य तद्भवति सामर्थ्य विशेषयुक्तस्य आत्मविशेषस्य भक्तान्तःकरणं नैर्मल्यं वाक्यात् प्रतिसिद्धान्त सिद्धं वा तन्मार्गे साधनाभावं सूचयति हरिति विशुद्धत्वं मार्जनेन तेज संपादनेन च तदर्थं च प्रेमेव स्फुरति वा प्रतिबिम्बे वेति संदेह आह साक्षादिति तदव अवच्छेदेन तस्मिन् आविर्भावे तेनेव ग्रहणं ननु जडेन तद्ग्रहणेन विषयत्वं स्यात् भक्तिफलित्वेन ग्रहणेन चक्षुरपि आध्यात्मिकं रूपं तथा पाकृति अपि अलौकिकत्वं पाकृतं सवितुरिति स्वतः एव उद्गतस्य प्रकाशिति स्फुरणम् अपराधीनता च चैतन्यानुसन्धान इत्यर्थः मार्गत्वेन आश्रयं सुतवतो राज्ञ कर्ममार्गे सर्वथा विशेषेण श्रद्धावन्तो बहुधा जिज्ञासा मानस्य प्रश्न प्रथम पाद एव प्रश्नः तस्य समार्गानुसारेण फलनिर्णयः त्रिभिपादैः संस्कार कर्म क्षय मोक्ता एकास्मिक गमनं क्रमेण अस्थिति चैव तेन मासनं च यजमान संस्कुरुते निर्वर्णात्वापि एते च निराज अभिसंपद्यते ब्रह्मार्पणमिति च तस्य निर्णयो मार्गान्तर विरोधेन ज्ञातव्य किंच संदेहा अंतरम अएवमिति पूर्व कर्म योगे अल्प संदेह स्थितः त्यक्त कर्मणो दृष्टा कृतः प्रश्न परम इक्ष्वाकु समीपे तत्संदेह कर्मयोग एव समीचीन तेषां वक्तव्यो वा सदोषे परित्यागवयम् न बुद्धिभेदां जनयदिति वा अतः तत् कारणम् उच्यताम्। कर्म निर्धारणेन वास्यापि गतत्वात् एकस्य उत्तरमा कर्म अकर्मेति सर्वयज्ञा यस्मिन् प्रकटा भवन्ति इति तथा आदौ कर्मणां त्रैवेद्यं प्रमाणमः विषयो भिन्नो लौकिको वैदिकस्य तथा लौकिका प्रत्यक्षादि समधिगम्या वैदिकास्तु वैदिक समधिगम्या तथा शब्द मूलानां न प्रत्यक्षादि बाधकत्वं समान शब्देषु संदेह तत्रापि दध्यादिशिवाद भेदेव प्रकृते तो कर्म अकर्म विकर्मेति विहितं निषिद्धं विहिताकरण रूपं च वैदिक समापसिद्धो अयम् अर्थो न लौकिक तथा वेदे परस्परं शब्दार्थ निर्धारे अपि अभिप्राय संदिग्ध न च संदिग्धं प्रमाणतो न वा तथात्वं दोष वेदस्तु ईश्वर स्व आत्मानं वदति तथा अभिप्राय संदेहात् स्वभ्रांत्या प्रतीत्यार्थे वेद तात्पर्यवादिन परस्परं मतानुसान्दानेन मुग्धा भवन्ति तस्मात् वेद निर्धारार्थे न कल्पनायुक्ता तथा स्वमते अभिप्रायं वनयति परोक्षेणेति अयं कर्म प्रतिपादको वेद फलमंसे परोक्षवाद कर्म भाव साम्याद् वदति फलभोगदशायां कर्म भाव अनता फलांसे लौकिकं स्यात् वस्तुतः स्वलौकिका एव पश्चाद् यो अपि वोचाम बालानुशासन परत्वेतु तुल्यता लौकिक इष्टत्वात् मोक्षश्च फलानां मुख्य अष्टवर्ष ब्राह्मणम् उपनियत तम् अध्यापयेदिति बालानाम् अनुशासनत्वं मां फल विचारे क्रियमाणे न अलौकिकत्वेन समाधानं किन्तु सुख दुःखाभावाभ्यां तथा च संगात् आत्मसुखस्य फलत्वेन सर्वो परति तनुम् इति न्यायेन स्वाभाविक कर्मणां निवृत्ति अपेक्षितम् अनता वेदस्य व्यर्थवत्ते यथा रोगाधिकारे प्रवृत्त आयुर्वेदः तथा संसाराधिकारे वेदः
अतो वैदिक कर्मणां स्वाभाविक कर्माणि निवर्तन्ते इति सिद्धम् अकरणे बाधकमान् न इति ज्ञानाग्निना सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन इति चित्तवृत्ति निरोधो योगस्य उभाव भावे वैदोक्त कर्म भावे च स्मृत्वा पुनः मृत्युम् आपद्यन्ते अर्धमानात् स कर्मभिः इति न्यायेन अनिष्टफलं स्यात् स्वाभाविक कर्मणां कथं पारलौकिक अनिष्टफलत्वं तथा विकर्मणा धर्मणेति आज्ञावलग्नम् अधिकोऽयं दोष अधिकारिण सर्वथा अधर्मत्व हेतु स्वाभाविक कर्मणां तु मृत्यु प्राप्त अनन्तरं जन्म अतः हेतु यातना भुक्त्वा पुनः मरणमिति विशेषः ननु वेदोक्त कर्म करणे अपि न निस्तार स्वाभाविकानामपि विद्यमानत्वात् औषधापथ्यवत् संगदोषाश्च अन्ये तथा करणदोषा फलवाक्यानि च बाधकानि श्रुतिलिङ्गयोर श्रुतिर्बलियसि समाञ्चयो वा फलयो तथा च बहु बाधकानां विद्यमानत्वात् व्यर्थ प्रयासेति चेत् तथा वेदोक्तेति वैदिको भूत्वा कर्म करणेन वैदिकम् एव कुर्यात् यजमान याजनादिभिः अकर्ण काले निसंगः उपक्रम विरोधात् न मानस अर्पितम् एव करोतीति न साधन वैगुण्यम् वेदाभिप्रेतार्थं करणात् सिद्धि प्राप्नोति तथापि अभिप्रेतानां फलानां कथं भाव तथा रोचनार्थं रुचिरोत्पादनार्थं बहूनि फलानि वेदे बोधितानि न तु तत्र तात्पर्यः कर्तु फलाभिसन्धान भावे न भविष्यति भाव एवं वैदिक कर्म योग निर्धारम् उक्त्वा सुगम सर्वजनिनां तांत्रिक कर्म निर्धारमाय इति लौकिकस्य अनर्थस्य लौकिकेरेव निवृत्तिरुक्तेति सांख्यादय सिद्धान्ता प्रवृत्ता तथापि शीघ्र हृदय ग्रंथि विभेदको वैष्णव परमात्मनो विधिना न विभूत्यादि भंजन प्रकारेण केवल पुष्टि मार्गे नित्यर्थ तदा सक्तो तंत्रोक्त प्रकारेणापि कृष्णमेव भजेत अथवा समुच्चयो मर्यादया उभावतापि पुष्टि मार्ग स्थितत्वान् केशवमेव भजेत मार्गान्तर विरोधाभावं भजन प्रकारमान् लभ्यते दीक्षायाम् अन्याधिकारो निवर्तते अनुग्रहस्य प्राप्ता न देवता विरोध उपनयनाधिकर्तारो आचार्य तद अनुग्रहात् न वेद विरोध अन्येन अविरोधेन अन्यस्य विकर्मत्वम् स्वयं करणे ही सर्वत्र दोष आचार्य भगवत मार्गस्थावा उद्देश्य फले न कर्मानुपयोग कर्तुं संस्कृतं तु अन्यथापि भविष्यति आश्वेति वचनात् न परलोक बाधकत्वम् अहंकार ग्रंथि निवृत्तो मुक्तिरिति सर्वमत साधनं परम् आचार्येणापि आगमनमेव पंचरात्र मध्ये नवनित्यौर्यादि रूपेषु स्वभावो नियामक पूर्वोक्त दोष भावाय का कर्तु सिद्धि महा सुचिरिति शौचम स्मार्तम सन्मुखम आसीनम प्रतिमाया आदि शब्देन भूत सूक्ष्मी प्रकारामुक्ता न्यासेन देवता वाहनम रक्षयाम बाधक निवृत्ति हरि न प्रतिमाम अतः एता अधिकरणस्य अवस्थां वदन् मध्ये व्यथानाम् अभावाय अर्चेति स्पष्टम् अंतरंग प्रकार पाद्यति आदि शब्देन अध्याचमनेनादि अतः भिन्न प्रक्रमेण विधानेन प्रवृत्त सन्निधाप्यति मुद्रया देवता सन्निधानं कृत्वा तथा सावधान ततो हृदयादि कृतन्यास स्वस्मिन् ध्यानेन मूल मंत्रेण आचयेत् सांगेति अंगानि चरणादीनि उपांगानि चक्रादीनि पार्षदा सुनंदादय एवं सांगोपांगम सर्वपार्षदम हृदये पूजयेदिति पूर्वेण संबंधः ताम उत्तरत्रं पुरोक्त पादद्वयम् अर्धमः सांगेति त्वां पुरोक्त प्रकारेण हृदय पूजितां मूर्तिरूपां बाह्यं कृत्वा नमेदिति संबंध कथम एतमेव अहम् अस्वमन्त्रतः अन्तरस्य बाह्यत्वं मन्त्रवशात् भवति मंत्र तस्य मूर्ति च उद्देश्य विधेय भावः
पूजा क्रममा पादनेति सार्धेन आदि शब्देन मधुपर्खाद्य अंगाभ्यादि अक्षता माला कुंकुमाक्षता वा नमनम क्रिया समाप्ति सूचकम स्तोत्रम नमने